The matter has now been handed over to the National Investigation Agency. The NIA is now set to probe the Delhi car blast case. Javed, take our viewers through the details, please. ट्रांसफर किया गया है इस पूरे मॉड्यूल को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एफआईआर में ये साफ जिक्र हुआ है यूएपीए और टेरर एक्ट को लेकर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें बीएनएस के तहत भी कई धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर, और जिसमें एक एफआईआर में एक जगह ये जिक्र है ब्लास्ट को लेकर कि किस तरीके से जो लाल किले के बाहर की जो चौकी है, जहां से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही जो ब्लास्ट हुआ है, उस लाल किले की चौकी के दीवार भी जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और इसमें यह माना गया है कि ये जो ब्लास्ट है, सुबह में ही सूत्रों के हवाले से जानकारी आ गई थी कि डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ है। और अब जिस तरीके से एक पूरे प्लानिंग की बात सामने आ रही है, और अमूमन जिस तरीके से एक पूरा रूट मैप सामने आ रहा है कि गाड़ी किस तरीके से चली फरीदाबाद के रूट से, और जिस तरीके से सोमवार के दिन ही दिल्ली के से सटे महज 70 किलोमीटर की दूरी पर फरीदाबाद के धौज इलाके में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरीके से कश्मीर मूल के कुछ प्रोफेसर्स जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, ऐसा एजेंसी और दिल्ली पुलिस के सोर्सेज इसलिए मान रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा जो खेप पकड़ा गया, यानी कि 2900 किलो के आसपास जो पूरा विस्फोटक मिला, जिसमें से अमोनियम नाइट्रेट है, इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स है, इसके अलावा आपको आर्म्स एम्यूनेशन, पिस्टल, कार्टेज और जो एसॉल्ट जो राइफल वहाँ से मिले हैं। इस तरीके से एक बड़ा खेप मिला है। तो आखिर एक जो टीचर जो यूनिवर्सिटी में जो है वो मेडिकल का क्लासेस लेता है, तो आखिर उसको क्या जरूरत पड़ी? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि हाल ही के दिनों में देश में साउथ इंडिया की बात करें या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर हम पश्चिमी इंडिया की बात करें, तो हाल ही के दिनों में कई छोटे बड़े जो टेरर मॉड्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, अपने आप को बड़ा करना चाह रहे थे। और इन सब के पीछे का जो बैकअप था वो लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हुर्रियत जैसी जो आतंकी संगठन है वो इनको कहीं ना कहीं बैकअप दे रहे थे। जिस तरीके से अगर हम पिछले साल की बात करें तो जो राजस्थान के अलवर, जो कि मेवात का एक बॉर्डर इलाका भी हम कह सकते हैं, और धौज और मेवात और अलवर बिल्कुल आसपास 100 और 150 किलोमीटर के रेंज में ही जुड़ा हुआ है। तो अलवर में भी एक पूरा ट्रेनिंग कैंप को बस्टेड किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस और झारखंड पुलिस ने इस पूरे एग्जीक्यूशन में इसको पूरा एग्जीक्यूट किया था, इसका भांडाफोड़ किया था। वहां पर कई नकली आर्म्स एम्यूनेशन मिले थे जो ट्रेनिंग दी जा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है। उसके बाद हाल ही के दिनों में अगर हम 2025 की बात करें तो एक महीने पहले ही झारखंड में भी आईएसआईएस और अल-कायदा सब कॉन्टिनेंट जो टेरर मॉड्यूल है उसको भी पर्दाफाश किया गया था। इसको लेकर भी कई जो ऐसे आतंकी संदिग्ध आतंकी हैं उनके हैंडलर्स और स्लीपर सेल जो है वो सामने आए थे। और अब जिस तरीके से ये कनेक्शन है, क्योंकि देखिए देविका, इतने बड़े जो एक्सप्लोजिव का जो एक पूरा जो 2900 किलो जो एक्सप्लोजिव था वो ऐसे एकदम से नहीं आ सकता। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था और NewsX पे खुद वहां के लोगों ने बताया कि इससे पहले हमने कोई संदिग्ध नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाया गया। क्या ये I-20 कार जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें कुछ अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव पहले से रखा हुआ था, या इसको प्लान के तहत यहां पर इसको एग्जीक्यूट करना था? अब दिल्ली पुलिस और NIA एक चीज को और तलाश रही है देविका, कि क्या ये गाड़ी इससे पहले, यानी कि कुछ दिन पहले तो आकर रैकी उन्होंने नहीं की थी कि गाड़ी को कैसे रखना है, क्योंकि शुरुआत में ये लग रहा था कि CNG। जावेद बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर Shashikant, former DGP of Punjab, has also joined us. Before we bring in Mr. Kant, I want to quickly show the latest CCTV footage of the I-20 car that was used in the blast. On the screens, viewers, is the latest footage of the Hyundai I-20 car, which shows that the car was undergoing a pollution check. The video is from the 29th of October, which is just a few days back, wherein the car can be seen undergoing a check at around 4:19 p.m. It is suspected that the bearded man who we can see with the car in the video is a man called Tariq, in whose name Dr. Umar had purchased this car from the initial owner Mohammad Salman. Several names now coming out as far as this particular case is concerned. On that note, let me bring in Mr. Shashikant, former DGP of Punjab.
Mr. Kant, I want to understand, sir, from your perspective, in such cases where multiple terror plots are being foiled on a daily basis by a host of investigative as well as security agencies, where exactly are we expecting the investigation to head now, sir, and how critical will the next few days be, given that we are on a minute by minute basis getting updates of people getting detained and some even getting arrested with more and more incriminating materials? Yeah, in the coming days, rest assured, is going to be very critical as far as particular investigation is concerned. Right now, you were talking about this particular car that was undergoing some pollution test at some place. That again shows how careful these guys were. Sometimes police stops a vehicle because there's too much of polluting things coming, pollution coming out of it. They check it, so they try to ensure that the vehicle doesn't get stopped anywhere or it doesn't get impounded anywhere. Number one, this thing. Second, again, coming to where this particular investigation is going to lead us, I'll just mention that, as you rightly mentioned, in the previous few months, there have been a lots of such cases, such obnoxious kind of cases everywhere. One weakness we have as the police and intelligence agencies in this country is that we hesitate to share information. Everybody thinks that he's gonna get claim more mileage and one-upmanship, as we call it. Probably this is the reason that there was no proper exchange of information. In this particular case, again, ma'am, you will see that Jammu and Kashmir police and Haryana police had together attacked. They raided that particular place from where this explosive was recovered. But again, next day, the day of the blast, this particular vehicle was seen entering into Delhi through Badrapur border. I wonder why the Haryana police had not shared this particular information with the Delhi police, or if they had, that means there is a lapse, there's some breakdown on part of the Delhi police. This question. Now, next, rest assured that police is going to have tough time. The very fact that now the government agencies are hesitating to come out with their what they believe in, what they think is the thing, what really happened and who's responsible, could be that they're trying to, and our minister has said this thing, they will compile all evidence that they have and then go public about it. They'll reveal what exactly had happened. So again, this means that, well, the coming days, they have to go through the internet, because these persons, one group sitting in Jammu and Kashmir, one group sitting in Faridabad, and as I was listening to some of the channels, they were saying probably the links are, it's connected up with Lucknow also. So that means that there was some conferencing and between all these persons, encrypted possibly, and again possibly as a guest as a police officer, that probably there was some handler sitting abroad, but maybe in Pakistan most probably, who was sort of indoctrinating these persons. But normally what happens, guys who indulge in this kind of activities, they're not very literate and easy to brainwash them. Here we have educated persons, doctors at that, and still they were brainwashed. That means that whatever was going on the internet, conferencing, etc., that was very sinister, and maybe somebody was guiding how to give psychological input, because if you want to brainwash some person, there has to be lots of psychological inputs also. This, and then police, again, like you asked where the investigation might lead to, from where this particular explosive and gun, etc., has come. We all in the intelligence and police forces know that there is a thing called darknet. Things are available on darknet. But again, darknet is one thing where you book the order, but there is some person, some vehicle, some hand which physically brings the equipment, explosives, whatever gun, whatever it is, and delivers it. So it's gonna be a tough investigation. They have to link up all the wires together and then present it to the government so that they can reach some conclusion and bring this thing in front of the international fora. Thank you. So stay on with me. I'd like your perspective on some more news that is coming in.